Hello, aspirants. Welcome back to the channel and also to our very important series of computers, starting from chapter 1. ରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି chapter को ଆମେ ଏଠି full basic ରୁ advance ଯାଏ cover up କରିବା MS Office ହେଇଗଲା MS Word Excel PowerPoint Access ବା networking ବା ଯଦି ଦେଖିବା email internet security ସବୁ chapter को ଆମେ individually chapter ତାର MCQs revision session ओके ए series रे कंप्लीट କରିବା ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କୌଣସି एग्जाम OSSC ହେଲା OSSC ହେଲା SSC ହେଲା बैंकिंग रेलवे ସବୁ एग्जाम ପାଇଁ ए series ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି मूल्यवान ରହିବ ओके तो चलंतो स्टार्ट କରିବା फर्स्ट व्हाट इज कंप्यूटर रो मीनिंग कोन द कंप्यूटर रो मीनिंग हैला टू कैलकुलेट एंड एटा आसीची गोटे लैटिन वर्ड कंप्यूटर रू okay and computer is an electronic device that processes raw data into meaningful information raw data दिया गले ताको meaningful information से process करिवो बा convert करिवो गोटे सेकंड ओके raw data that users give to the computer and a raw data को से आगो को CPU को दबो and CPU ताको meaningful information रे process करिवो okay meaningful information it performs the four basic function or operation कौन input processing output and storage input of raw data processing in the CPU output in the output device and then this output is stored in the storage okay mane rahila keteta चारिटा बेसिक ऑपरेशंस कंप्यूटर कंडक्ट करे इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट एंड स्टोरेज नेक्स्ट जीवा फंक्शंस कौन कौन हमरो एबे पढ़ी के आसले इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट एंड स्टोरेज इनपुट ऑफ रो डाटा हमें जोटा डाटा दउचंदी कंप्यूटर को एंड सेटा प्रोसेस हेई सला परे सेटा इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट हुए मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शन ओके एंड प्रोसेसिंग रे कौन होचे हमरो सेई जो डाटा हमें प्रोवाइड करचंती at the user level सेटा कन्वर्ट हुए into meaningful information एटा CPU रे एठु कला CPU रे कन्वर्ट हे कि आसीबो हमरो आउटपुट रे कोन हबो डिस्प्ले हबो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट अच्छा ए जो सब होउची ए सब कोठी तो स्टोर होतबो तो कोठी स्टोर होची स्टोरेज रे सेव डाटा परमानेंटली और टेम्परेरीली ओके डायग्राम जदि हमें देखिबा इनपुट हमें देले इनपुट रु कला आउटपुट सॉरी प्रोसेसिंग है कि आउटपुट रे आसिला एंड स्टोरेज रे स्टोर हैला नेक्स्ट फीचर्स कौन हमर फीचर्स रहउची स्पीड रहउची एक्यूरेट आंसर्स रहउची स्पीड माने जेति कि भी ताको टास्क दियो मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन इट कैन बी प्रोसेस्ड ओनली इन सेकंड्स ओके एक्यूरेट रिजल्ट दबो जदि तुम इनपुट करेक्ट थिबो देन से अनुसार से रिजल्ट को डिस्प्ले करिवो जदि इनपुट भूल थिबो रिजल्ट हमें एक्सपेक्ट जदि ठीक करिवो ताले हबनी ओके स्टोरेज कैपेसिटी डिपेंड ऑन योर डिवाइस ओके स्टोर can store a large amount of data. Versatility जदि देखिबा performs multiple tasks simultaneously at a time से one ru various task perform करि परिबो. Diligence never get tired से ताकू जते भी काम दियो any time जदि आपनकर पावर ऑन अछि तार काम भी ऑन ओके सिक्रेसी आमे पासवर्ड ऑथेंटिकेशन ए सब रे डाटा को प्रोटेक्ट करके रखि परिबा रिलायबिलिटी जदि देखिबा consistent and dependable result again that depends upon the input you provide to the computer plug and play it can adjust to your hardware and software configuration okay जा new device हमें attach करिबा ताकू से auto configure करि परिबो ओके नेक्स्ट जीवा हमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इस स्लाइड बहुत इंपोर्टेंट काहे कि ना एटु क्वेश्चन आसीची जेमति कि हमर फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कैलकुलेटिंग डिवाइस जोटा एबाकस 1602 चाइना रे एटा इन्वेंट हेतिला ओके नापियर स्पून हमरो यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन जॉन नापियर बाहर करथिले 1617 रे ओके इन्वेंट करथिले जॉन नापियर पास्कल ना गोटे इंपोर्टेंट हे जिवो 1642 रे बस ब्लेसी पास्कल बाहर करथिले इन्वेंट करथिले फर्स्ट एडिंग मशीन जति कि एडिशन हैला सब्ट्रैक्शन हैला जति कि 2 नंबर रो एडिशन कैलकुलेशन सबु पास्कल इन रे होतले जैकॉर्ड लूम सेटा गोटे पंच कार्ड आकार यूज होतला ताको बाहर के करथिले 1801 रे इन्वेंटेड बाय जोसेफ जैकॉर्ड एनालिटिकल इंजन अगेन दिस इज एन इंपोर्टेंट एनालिटिकल इंजन जोडे जोडा मो मार्क करछि सेटो क्वेश्चन आसीछि सेति पे मो मार्क करछि इंपोर्टेंट मध्य 1837 रे चार्ल्स बैबेज याको इन्वेंट करथिले एंड इट इज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड हेंस ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर
tableting machine ଆମର ହାର୍ମାନ ହଲରେ ବାହାର କରିଥିଲେ 1890 ରେ and it is used for the calculation of population ଯୋଉଟା ୟୁଏସ୍ ରେ ୟୁଜ ହଉଥିଲା for US census. Mark 1 1944 ରେ ହକୱାର୍ଡ ଏକିନ୍ invent କରିଥିଲେ and it was used in the World War II ରେ. ENIAC is also important, that is the first electronic digital computer. Okay. ENIAC ର ଯଦି ଆମେ inventor ର ନାଁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ JP Eckert and JW Mockley. MA, just a second. ନା ଯଦି ବି important ନାହିଁ ବଟ୍ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ JW Mockley. ओके नेक्स्ट ଯିବା ଆମେ generations of computer ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ପାଞ୍ଚଟା generation ଅଛି total ପାଞ୍ଚଟା generation ରେ ଆମର switching devices varieties use ହେଇଛି ओके ସବୁ generation ରେ updated ହେଇକା ଆଜି ଆମେ artificial intelligence ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ओके तो फर्स्ट जनरेशन हमर कोन हिची वैक्यूम ट्यूब्स सेकंड जनरेशन रे ट्रांजिस्टर थर्ड जनरेशन रे इंटीग्रेटेड सर्किट फोर्थ रे माइक्रोप्रोसेसर और VLSI जाको हमें कहि परिबा वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड circuit okay very large scale integrated circuit artificial intelligence fifth generation रे और ULSI ultra large scale integrated circuit okay amoro first generation रे machine language use होची machine level language ENIAC example second रे assembly language जोटा कि IBM 1401 गोटे तार example third generation रे high level language use होची fourth generation रे Intel 4004 गोटे तार example and fifth generation रे हमर robotics आसी जाउची as an example okay next जदि हमें देखिबा classification of computer based on size work and purpose okay size रे जदि हमें देखिबा micro mini mainframe super computer nano computer embedded आ गोटे अछि एटी quantum computer okay micro computer small and it is only for personal use जोटा कि जेमते हम देखिया डेस्कटॉप एट ए टाइम जणे ही बसी कि यूज कर परबो लैपटॉप palm top ए सब मिनी कंप्यूटर रे कोन रहउची मीडियम साइज रो रहउची and multi user okay more than one can use at a time then amaro mainframe रहउची large memory इथरे large memory रहउची and इटा गोटे network of computer जोथरे हमें multi user environment provide करिवो more than one people okay large number of people can use at a time supercomputer fastest and yet and also expensive okay जदि हमें सुपर कंप्यूटर रो देखिबा किछटा एग्जांपल हमरो परम क्रे1 प्रत्यूष ओके एउडा हे गला सुपर कंप्यूटर रो एग्जांपल हमरो जति कि भी वेदर फोरकास्टिंग ए सब रे हमर सुपर कंप्यूटर यूज हुए नानो कंप्यूटर इज अगेन वेरी स्मॉल गोटे क्रेडिट कार्ड साइज रो नानो कंप्यूटर ओके माइक्रो कंप्यूटर थारो भी एटा छोटो एम्बेडेड कंप्यूटर जदि हमें देखिबा वेरी स्मॉल इन साइज बहुत छोटो yet powerful and also it is easy to operate this is built into the device such as camera card system act as a bridge between hardware and software okay अच्छा क्वांटम कंप्यूटर कोन क्वांटम कंप्यूटर गोटे हमरो ह्यूमन ब्रेन जेमति काम करे सेही पर एटा बहुत फास्ट क्वांटम कंप्यूटर इज वेरी फास्टेस्ट ओके एंड याको इंट्रोड्यूस के करतले रिचर्ड फेमन ओके नेक्स्ट जीवा हमें बेस्ड ऑन वर्क रे बेस्ड हेले हमरो एनालॉग डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग रे वर्क ऑन कंटीन्यूअस डाटा डिजिटल रे बाइनरी हमरो यूज होची 0 and 1 तापरे आसीबा हमरो हाइब्रिड रे इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल एटा ईसीजी मशीन हला बा डायलिसिस हला से सब रे यूज करा जाय ओके एंड बेस्ड ऑन पर्पस जनरल पर्पस अछि जोटा कि किछि भी वेरी टास्क पय यूज होची स्पेशल पर्पस अछि जोटा कि डिजाइन्ड फॉर वन टास्क कंप्लीटली और स्पेशल पर्पस पय यूज होची तो दैट इज स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स ओके ए डेडिकेटेड टाइप ऑफ प्रॉब्लम पे
नेक्स्ट हमर किछटा इंपोर्टेंट फैक्ट्स देखिबा आउ एठी जतिकी भी पॉइंटर्स अछि सबु जाको इंपोर्टेंट सबु ऑलरेडी माने क्वेश्चंस आसी सारिची फ्रेम हे की एमसीक्यूज गोटे गोटे चार्ल्स बेबेज हमर फादर ऑफ कंप्यूटर ओके फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग सिद्धार्थ fast computer developed in India. The fast computer developed in India hela Siddharth. Param hoche amaro fast supercomputer by Vijaya Bhatkar. Fast Indian supercomputer by Vijaya Bhatkar. And first multi-petaflop Indian supercomputer hela Pratyush. Okay. Amaro transistor ke invent करतले Bell Lab. How integrated circuit Jack Kilby and Robert Noyce. Okay. Next amaro जति भी पढ़िले तारो जदि शॉर्ट समरी हमें देखिबा कंप्यूटर कहिची कोठो आछि लैटिन वर्ड हमर कंप्यूटेरो जार मीनिंग हैला टू कैलकुलेट इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस रॉ डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फंक्शंस चारिटा बेसिक फंक्शन रोचे इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट एंड स्टोरेज फीचर्स जदि देखिबा डिलिजेंस रहला रिलायबिलिटी हैला वर्सेटिलिटी हैला एक्यूरेसी हैला स्पीड हैला एंड हिस्ट्री हमें पढ़िले अबाकस रो स्टार्टिंग हे कि एबे एआई सिस्टम जाय हमें पहुंची गले ओके जनरेशन हम टोटल 5टा अछि 5टा जनरेशन रे हमें कोन कोन यूज करचंती सब फर्स्ट जनरेशन रे हमें यूज करचंती वैक्यूम ट्यूब सेकंड जनरेशन रे यूज करचंती ट्रांजिस्टर थर्ड जनरेशन रे यूज करचंती इंटीग्रेटेड सर्किट फोर्थ रे हमरो VLSI और माइक्रोप्रोसेसर फिफ्थ रे ULSI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओके क्लासिफिकेशन हमर रहउची बेस्ड ऑन साइज वर्क एंड पर्पस बेस्ड ऑन साइज हमर कोन रहउची मेनफ्रेम कंप्यूटर देन सुपर कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर नैनो कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर सॉरी एम्बेडेड क्वांटम ओके तो मेन बेसिकली हमर माइक्रो मिनी मेनफ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर एंड जदि हमें बेस्ड ऑन वर्क देखिबा एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड तीनटा रहउची एंड बेस्ड ऑन पर्पस जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर देन हमरो इंडिया's कंट्रीब्यूशन जते हम देखिया परम प्रत्युष सिद्धार्थ इंडिया रो जोड़ा फास्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर हला परम एंड फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप इंडियन सुपर कंप्यूटर हमर थिला प्रत्युष टोटल ए चैप्टर रे जति के भी इंपोर्टेंट थिला मु सब आपन को दे देइची ता सहित ए जो पांचटा क्वेश्चन म आपन को पय छाडीची ए पांचटा क्वेश्चन रो आंसर्स आपन मते कमेंट सेक्शन में लिखि कि निहाती दियंतु ओके जी फास्ट आंसर्स दबो ता पय निहाती गोटे प्राइज रहिबो ता सहित मु एटा भी कहि दउची आफ्टर 1 to 2 डे और नेक्स्ट जो क्लास आसीबा हमरो सेठी मु आपनकर यार आंसर कमेंट सेक्शन रे आपन को पोस्ट कर देबी ओके जदि वीडियो भल लागुची ताके लाइक शेयर करंतु चैनल को सब्सक्राइब करंतु एंड हमरो नेक्स्ट जो वीडियो आसीबो सेटा या ऊपर जति कि भी एमसीक्यूज हमें प्रैक्टिस करिबा ताको रिवाइज करिबा तो टिल देन स्टे ब्लेस्ड थैंक यू